Okay, due to some internet issue, I think so some internet issue was there. So we start it now. On board, you see on the board there is a two types of friction. Already I have mentioned coefficient of friction mu s and mu k, and such types of this diagram which I have represented here. Such types of diagram you might have or you experienced it. Suppose that if I want to move a stationary vehicle, four-wheeler vehicle, or maybe a two-wheeler vehicle, initially to move this vehicle by force, means if I wanted to apply the manual force to them, initially maximum force is required to move the vehicle, and once it is in motion, then frictional force is less. So it is suddenly dropped. The value of friction is suddenly dropped. The highest value in the friction is called as a limiting value of friction. Highest value of a friction is called as a limiting value of the friction. So up till now we have related means basic things of friction we have seen. Now we will write means I explained through this diagram we have clarified two things. There are two types of frictions are going to exist. One is the static friction and another is the dynamic friction. That things also I have given in a write up. Okay, now we'll take a next example, next part of this, the laws of friction. So write it down, the laws of friction. So what are the laws of, means whatever things which we have seen related to the friction that we have required to write. So write it down, a laws of friction. Okay, so write down first law. The friction of the moving object, friction of a moving object is a proportional, is a proportional. The friction of a moving object is a proportional to reaction. The friction force is proportional to the reaction force which is perpendicular to the surface. So write it down. Everyone is required to write down this statement. These are the laws. Next law, the friction force always acts. The friction force always acts in a direction. Friction force always acts in a direction opposite to that. The friction force always acts in a direction opposite to that in which the body tends to move. In which the body tends to move. Third one, the friction force is dependent. The friction force is dependent on the nature of surface, dependent on the nature of the surface in a contact. Friction force is dependent on the nature of the surface in a contact. Fourth one, the force of static friction, does not depend upon the force of static friction does not depend upon area, volume, size, and shape as long as
as long as normal reaction remains the same. As long as normal reaction remains the same. Fourth one already I mentioned, means what is the meaning of that? The frictional force is dependent on, not on, means dependent on weight. It is not dependent on the area, volume, size and shape of that structure. Okay, as long as the reactions remain the same. Okay, so last one, the limiting force of friction bears, the limiting force of friction bears, the limiting force of friction bears a constant ratio, bears a constant ratio to normal reaction. Limiting force of friction bears a constant ratio to normal reaction, and this constant ratio is called as, coefficient of static friction. Okay, again I am repeating, the limiting force of friction bears a constant ratio to normal reaction, and this constant ratio is called as coefficient of friction. Now we know that mu is equal to F upon R. So frictional force divided by reaction force. ओके, हॅलो सर. हाँ बोला की. तर जरा फर्स्ट लॉ जरा रिपीट करा. First law, the friction force of moving object, the friction force of moving object is proportional to, perpendicular to normal force, Okay, so in this way we have seen some part of in friction. Just one theoretical part left. After that we are going to start the numericals. Many times this thing also you are experienced. आपने ये भी थिंग कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा. एक इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है, और इस इंक्लाइंड सरफेस पे आपने क्या किया कि इंक्लाइंड सरफेस ऐसा इंक्लाइन करते आपने ऊपर ऊपर लेने की कोशिश की. एट वन स्टेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस ब्लॉक इज गोइंग टू स्टार्ट स्लाइड. वो स्लाइड करने की अभी कोशिश करेगा. Again I am repeating this. This is the inclined surface. Previously it was here. I have inclined or I have uplifted this in this way until this block moves or tends to slide. ये slide होने की कोशिश में आएगा. Again I am repeating this. ये जब तक ब्लॉक मूव होने की कोशिश नहीं करता तब तक उसको हमने लिफ्ट किया. जितने एंगल को, जिस एंगल को वो स्लाइड होने का स्टार्ट हुआ, उस एंगल को एंगल ऑफ रिस्पॉन्स बोलते हैं. एंगल ऑफ रिस्पॉन्स. ओके, मीन्स दिस एंगल इज सफिशिएंट टू ओवरकम द फ्रिक्शन. दिस एंगल इज सफिशिएंट टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स जनरेटेड हियर, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिस्पॉन्स. So write down heading, angle of response, and draw this diagram. Again I am repeating this. ये जब तक, हाँ सर फोर्स लॉ आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर.
कौन सा? Force of static friction does not depend upon area, volume, size, and shape. Okay. See here. Suppose that 1000 Newton vehicle is there. 1000 Newton or 100 kilogram. 1000 Newton means 100 kilogram vehicle is standing on the road. I have shown in this way. ना इसका सरफेस से मेरे को मैंने ऑलरेडी बताया है कि सरफेस कैसा है. सरफेस इफ सपोज इट इज आइस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर मींस स्मूथ, वेरी स्मूथ सरफेस होगा तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा. रफ होगा तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू नियर अबाउट 0.9 के आसपास आएगी. एक्चुअली इट शुड बी अ 1, बट इतना रफ भी सरफेस हम नहीं कंसिडर करते कभी. सो 0.9 टाइप ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा. लेकिन ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल का एरिया कैसा है, एरिया स्ट्रक्चर कैसा है, इसका वॉल्यूम कैसा है, इससे फ्रिक्शन को कोई लेना देना नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सपोज दैट सेम व्हीकल 1000 न्यूटन का व्हीकल मैंने बहुत छोटे में, ये बहुत बड़ा है, लेंथ है, मैंने बहुत छोटे में कंस्ट्रक्ट किया, तभी भी 1000 न्यूटन फोर्स को उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होगा. एरिया डजंट मैटर, एरिया और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज अ प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन फोर्स एंड रिएक्शन इज अ परपेंडिकुलर टू द, मींस इफ यू सी दैट रिएक्शन इज directly proportional, I can say if it is a straight road is there, then R is equal to W. If I do the summation of f of y, then R is equal to W. So it does not depend. Suppose that here it is not showing to you. Same vehicle is there. Again, I am repeating this. Same vehicle is there. Same vehicle, but area is very small, volume is very small. At that time, the frictional force which is exerted here, that frictional force and frictional force exerted here, it is remain same. ये same ही रहेगा. So it is does not depend on the area. It is does not depend on the volume. Clear? सर स्टैटिक फ्रिक्शन में है ना सर? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन में ही बोल रहे हैं ना हम. डायनामिक में होता है सर? नहीं, डायनामिक में कोएफिशिएंट, हाँ, काइनेमेटिक और डायनामिक एरिया और एरिया साइज और शेप डायनामिक में होता है सर, ये डिपेंड? वो चेक करना पड़ेगा. एक्चुअली उधर भी नहीं होना चाहिए इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उधर भी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रोड पे ही डिपेंड ज्यादा करेगा, वेट पे ही डिपेंड करता है. एरिया उधर एरिया और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा. एरिया और वॉल्यूम पे शायद नहीं करेगा. सो आई विल चेक इट एंड टुमारो आई विल एक्सप्लेन टू यू. But in my point of view, it should not be. सर स्टैटिक फ्रिक्शन में कहाँ से डायरेक्शन रखेंगे सर हम इसकी फ्रिक्शन की सर स्टैटिक में? लेकिन स्टैटिक में डायरेक्शन क्या रहती है सर फ्रिक्शन की? See here, I have applied the force here. तो definitely the frictional force should be opposite to the applied force. क्योंकि इधर से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉडी मोशन ये सरफेस स्मूथ होता तो थोड़ा भी धक्का दिया होता तो ये क्या हो जाएगा कि स्लाइडिंग हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? लेकिन इफ द सरफेस इज रफ, डेफिनेटली द फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर. सो सपोज दैट यस्टरडे, सो दैट इन लास्ट लेक्चर मैंने आपको इसी तरह से समझाया था कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन ही रहेगा. 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो इधर भी 20 न्यूटन ही फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा. सो अपोजिट फोर्स इज 20 न्यूटन. बट इसका एक लिमिटिंग वैल्यू है, फ्रिक्शनल फोर्स का एक लिमिटिंग वैल्यू है. सपोज दैट दिस लिमिटिंग वैल्यू इज 50 न्यूटन and if I applied 60 Newton force, then this body tends to move. ये बॉडी तभी मूव होने की कोशिश करेगा. उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है, वो पर्टिकुलर वैल्यू क्रॉस होने के बाद वो बॉडी मोशंस में चली जाती है. क्लियर? तो ये ऑब्वियसली 0 Newton is also a frictional force if we have not applied the force. If I applied 10 Newton force and body still it is in stationary condition, 10 Newton is a frictional force. So that the last law which I have explained means I have given in a statement, the coefficient of friction is the ratio of limiting value of friction divided by normal reaction. So when we are calculating mu s,
we are going to consider maximum frictional limiting value of any friction or maximum frictional value divided by normal reaction. Clear? ओके सर. Okay. सर अगर हम So right- अप्लाइड फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो उस वक्त होता है तो जीरो friction? न्यूटन ही फोर्स रहेगा ना उधर. किस डायरेक्शन में सर? हाँ? उसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? डायरेक्शन उधर होगी ही नहीं, क्योंकि आपने फोर्स से अप्लाई नहीं किया तो वो वैल्यू भी जीरो है ना. अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी जीरो है, तो ये अपोजिट फोर्स की भी वैल्यू जीरो ही है ना उधर. सो जीरो इज नॉट हैविंग ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड है ही नहीं ना. जीरो न्यूटन इज नॉट अ मैग्नीट्यूड. ओके सर. Clear? So write down the heading angle of response and draw this diagram. So angle of response, again I will repeat this. All right, write down below after this diagram the angle of plane at which body just begins, the angle of plane at which body just begins to slide down of the plane, is called angle of response or angle of friction. Angle of response or angle of friction, because this angle is sufficient to overcome the friction. Angle of response or friction. Okay, so this angle is sufficient to overcome the friction. So in this way, theoretical part of any friction we have completed. Now just for further information, because during solving the numericals this thing is required, so I am explaining this thing here to you. Suppose that body is on plane, एक ऐसे प्लेन पे बॉडी है, बहुत सारे हमको न्यूमेरिकल इसी टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने हैं. In this chapter, if you are not going to solve in dynamic, we have required to solve. Now how to do the resolution of such types of a body? Here एक बॉडी है, इंक्लाइंड सरफेस पे है, एक बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे है, तो उसका रिजोल्यूशन हम कैसे करेंगे, उसका फोर्सेस का डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे वो देख लीजिएगा. नाउ सी हियर द वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली, reactions are always perpendicular to the surface. Clear? Now I knew it. If this angle is a theta, this is a 90, so this will be the 90 minus theta. Clear? If this is a theta, this is a 90, this will be the 90 minus theta. Clear? Now I have to resolve along the plane. Up till now we have did the resolution along x and along y, but I have required to resolve this plane along the plane. So now instead of considering x-axis this, I have required to consider x-axis this and y-axis this. I have required to consider, instead of considering this x-axis, I have required to consider x-axis which is inclined, which is parallel to the plane. So at this time, the weight one component W cos 90 minus theta or theta, we will check this. So W cos, and this another component of weight will be W sin. So it is theta or 90 minus theta, we will check it. Now see here, this plane makes an angle with a horizontal. This plane makes an angle with a horizontal, how much? It is a theta. So how much will be this angle? Who is going to tell? Now see here, this line makes angle with a horizontal theta. Theta and this theta will be remain same.
this and this are perpendicular, so what will be this value? This will be the 90 minus theta. Any doubt related to this? Because many students don't understand this concept. See here, this plane and this plane are parallel to each other. So if it is making angle with horizontal, it is a theta. Obviously, with horizontal, this plane is also going to make angle theta. Now, if it is making angle theta, this and this line is a perpendicular because this is a vertical, this is a horizontal. So this distance is a 90 minus theta. Now, if I want to do the resolution, see here, in this way I have required to make a triangle. In this way I have required to make a triangle. So this is a 90 minus theta. So this is a theta. Am I right? So horizontal component will be W cos 90 minus theta, and vertical component will be W sin 90 minus theta. Are you understanding or not? Any doubt related to this? Or is it I have required to explain repeatedly? So repeat करा sir. Repeat out. होगा high angle theta, this angle is a theta. ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है. इसने और I will take examples. There should not be a confusion. 30 degree. थीटा लिया, थीटा की जगह मैंने 30 डिग्री ले लिया. So there will not be now confusion. Now if it is theta, this will be a 60 degree. So reaction is going to make angle 60 degree. Clear? Now you can check it now. मैंने क्या किया कि ये 30 है तो ये लाइन को हम किधर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये 30 ही रहेगी. मैंने इधर ड्रॉ किया. ये कितना हो गया? ये 30 हो गया ना विथ हॉरिजॉन्टल. दिस लाइन इज गोइंग टू मेक एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा ना. कोई डाउट इसमें? ये जो एक्स एक्स लाइन है वो कितना एंगल करेगा? एक्स एक्स ऑब्वियसली विथ हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री. इस पे कोई डाउट? नाउ यू टेल मी दैट द वेट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, or weight is always acts vertically downward. Weight is always acts vertically downward. So can I say that this line and this line are perpendicular to each other? Now if it is 30 degree, can I say that it is a 60 degree? Am I right? Now you tell me that. Now suppose that this is one force and I am resolving these forces along the plane. इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूं. तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, ये एक कंपोनेंट हो गया, ये एक कंपोनेंट हो गया. cos theta, this will be a cos and this will be a sin. If I have taken angle with horizontal, this will be a cos, means along x axis if I consider angle. Along x axis if I consider angle, so this will be a cos and this will be a sin. Am I right? So this will be W cos 60 and this will be a W sin 60. Clear? Okay. So again I am repeating this. Suppose if any plane is inclined on the surface, this angle if I consider 30 degree, weight is acting vertically downward. Reaction are perpendicular to surface. Clear? Now, if I resolve the forces along the plane, if I resolve the forces along the plane, this resolution means ये force को along the plane हम resolve कर रहे हैं. So W
this will be W cos 60, and this will be, I have resolved in this way because reaction is perpendicular to the surface, so that I have resolved this here, W sin 60. Clear? W cos 60, W sin 60, and the body is moving in a downward direction, so that frictional force should be in opposite direction. Fr is equal to mu into R. Fr is equal to mu into R. And if I do summation of f of y along the plane, so it will be Fr is equal to mu into W sin 60. If you understood this much thing, many problems you can easily solve. If you understand this small thing related to the friction, you can minimally 2 chapters, some problems are related to this. In second section, we have required to solve the problems. So at that time, you must require to understand this concept. Then and then you can solve the problems related to the sliding surface. Clear? So write it down this somewhere, draw this diagram. So what I wanted to say that here, frictional force is mu into W sin 60. Frictional force is mu into W sin 60. So somewhere you are required to draw this diagram, and you are required to complete this. So I will give 2 minutes time to you to complete it. Meanwhile, I will check internet connectivity. Okay, completed the diagram. Okay.
Any doubt? Any question related to this? Okay, now open assignment booklet. We'll solve the first problem in the assignment booklet. Mayuri, have you understood this concept? Mayuri Abangrao, roll number 1. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now, open assignment booklet now. Assignment booklet में से कौन सा problem? First problem we will take. Yesterday someone has asked me about assignments. So I will tell what you are required to write in assignment also. Okay, open page number 89. Problems on friction and coplanar non-concurrent forces, page number 89. नाउ अभी क्या करने का है कि आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए ना आपको असाइनमेंट बुकलेट आपके पास है, जो न्यूमेरिकल हमने क्लास में नहीं लिए हैं वो न्यूमेरिकल छोड़ के हर एक चैप्टर के मींस सीजीएमआई के 6 न्यूमेरिकल्स यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व एंड यू आर रिक्वायर्ड टू you are required to write assignment number 1 on CGMI. So 5 numericals on CGMI. So that will be your assignment number 1. Any 5 numericals I am saying that. Other than which we have solved. Have you understood or not? जो न्यूमेरिकल हमने क्लास में लिए हैं वो छोड़ के असाइनमेंट बुकलेट में से 5 न्यूमेरिकल आपको लेने हैं और वो असाइनमेंट के लिए सॉल्व करने हैं और यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड इट बिफोर 30th तक। आपको असाइनमेंट कितने कंप्लीट करने हैं? 3 असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। सो असाइनमेंट नंबर 1 ऑन CGMI, असाइनमेंट नंबर 2 ऑन फर्स्ट चैप्टर रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, उसमें से कम 5 न्यूमेरिकल ले लो, कोई भी न्यूमेरिकल विच वी हैव नॉट सॉल्व्ड इट। एंड थर्ड असाइनमेंट विल बी ऑन दिस इक्विलिब्रियम चैप्टर and there should be 2 numericals on sphere, 3 numericals on beam and 2 numericals on friction. So in this way 7 numericals you are required to solve on chapter number 2. So in this way 3 assignments just now I have given to you. आपको मैंने अभी तक तीन असाइनमेंट के बारे में बता दिया है। किसी को डाउट होगा तो पूछ लीजिए। ये असाइनमेंट 30th को मेरे को सबमिट करना है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? निकिता जगताप? मोनाली? Yes, sir. हा, काय डाऊट आहे का? असाइनमेंट मध्ये मला काल एक क्वेश्चन विचारला होता कोणीतरी, असं व्हॉट्सअपला टाकलं होतं की सर असाइनमेंट आम्हाला मिळालेलं नाही। नाही सर, मी नव्हता टाकला. नाही तुम्ही नव्हता टाकला, पण असंच कोणीतरी टाकलं होतं। सगळ्यांचे असाइनमेंट दिले आहेत त्यांना, माझी फक्त इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सचीच असाइनमेंट राहिलेली आहे असा एक मेसेज होता। तुमचं त्यांचा प्रश्न बरोबर होता, त्यामुळे मी काय ठरवलं की आज असाइनमेंट द्यायच्या तुम्हाला म्हणून ठरवलं होतं। सो असाइनमेंट आय एम क्लेरिफाइंग दिस टू यू। First assignment on CGMI, second assignment on first chapter, third assignment on the second chapter. CGMI 5 numericals, first chapter 5 numericals which we have not yet solved, and third assignment will be on equilibrium, 2 problems on a sphere, 3 problems on a beam and 2 problems on friction. Clear? Any question? सर जी लिंक दिले ना त्यात फक्त असाइनमेंट 1च अपलोड करायला सांगितलं, बाकीच्या 2 असाइनमेंट साठी लिंक दिली नाहीये सर। मी तुम्हाला काय म्हणतोय, आता लिहून ठेवा
नंतर हा नंतर ठीक कसं आहे जसं चालेल. जसं हे हा होईल हा तसं तसं तुम्ही अपलोड करा ना. हा ठीक आहे सर. आणि इथून पुढच्या बी असाइनमेंट त्याच असतील की आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस चॅप्टर नेक्स्ट चॅप्टर विच वी आर गोइंग टू टेक इन दैट यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व 5 न्यूमेरिकल्स. हर एक असाइनमेंट के लिए 5 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी असाइनमेंट बुकलेट में से रहेंगे. वो आप चूज कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल आप ले लीजिएगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल हमने क्लास में सॉल्व नहीं किया होना चाहिए. सर दूसरा असाइनमेंट काय हाँ, दूसरा असाइनमेंट काय दूसरा असाइनमेंट काय आहे म्हणजे दुसरा असाइनमेंट पहिल्या चॅप्टरवर आहे, त्यातले 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करायचे आहेत असाइनमेंट बुकलेट मधले. क्लिअर? हॅलो सर. हा, सर असाइनमेंट 1 आज सबमिट करा, म्हणजे आज लास्ट डेट सांगितली होती सरांनी, मग आता आम्ही फर्स्ट नाही मी ती एक्सटेंड करतो, कारण मीच लेट दिलेली आहे असाइनमेंट, त्यामुळे मी ती एक्सटेंड करू शकतो. 26 पर्यंत एक्सटेंड करू शकतो मी. ओके सर. हा, 26 पर्यंत तुम्ही उद्या संध्याकाळपर्यंत अपलोड करा. अप टू टुमॉरो इव्हनिंग यू कॅन अपलोड द फर्स्ट असाइनमेंट, and meanwhile you write the another 2 assignments. Keep it ready before 30th. You are required to submit it to me, and again we are required to take a chapter test number 2, test number 3, because today if I will get one another lecture, in that also I am going to complete the frictional part, means 2-3 numericals if I solve, we can say that we have completed the second chapter. But still if you not understood, then again tomorrow's one lecture we will complete the second chapter and we will start towards the third chapter. So 2 chapters test still we are required to complete. So that also I have to do. So in the coming couple of I can say within 2-3 days, I will conduct another chapter test which will be a surprise type of a test. I will not say that today only I am going on that particular day I am going to take a test. ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि कोई भी एक लेक्चर में मेरे को मिलने के बाद और मेरे लेक्चर को भी मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक चैप्टर टेस्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को असाइनमेंट बुकलेट में से ही देनी है. और आई विल गिव अ लिंक टू यू, मीन्स वो चैप्टर टेस्ट की लिंक बनाऊंगा जस्ट लाइक ISC 1 एंड चैप्टर टेस्ट 1. उसी तरह से चैप्टर टेस्ट 2 भी होगी, लेकिन इट विल बी अ सरप्राइज टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि टुडे आल्सो यू कैन चेक इट 55 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट नाउ, रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर absent. Now those are absent. For them again I am going to give a strict action through you. Those are present now. जो अभी है उनके थ्रू मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि ISC 2 के जो मार्क्स है वो मैं आपको नहीं दे दूंगा इफ योर अटेंडेंस गोज बियॉन्ड बिलो 80%. 80% के नीचे अटेंडेंस हो गई तो मैं आपको श्योरली बताता हूं कि मैं ISC के मार्क नहीं दे दूंगा. और आप बोलेंगे कि अटेंडेंस आप कैसे चेक कर लेते हैं? आई हैव सम अदर डाटा बाय विच आई कैन एक्सट्रैक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर. जूम पे वो सच टाइप्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल कि उनका एक गूगल शीट तैयार हो जाता है. तो मैं क्या करूंगा कि उस वक्त खाली मेरे को सॉर्ट आउट करना है खाली कि किसकी अटेंडेंस 80% के नीचे है. सेकंड ISC को आपने दिया अभी, लास्ट टाइम आल्सो आई हैव मेंशन दिस थिंग्स टू यू, कि जो मेरे लेक्चर को अब्सेंट है, क्योंकि अभी तक तो मैंने सोचा था कि जाने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट है, इंटरनेट का इशू होगा, लेकिन 20 स्टूडेंट्स, एब्सेंटिज्म ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज मोर. 5-6 स्टूडेंट को मैं कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन 20 स्टूडेंट बहुत है मेरे लिए. तो इट्स योर ड्यूटी दैट यू शुड रिक्वायर टू अटेंड द क्लासेस. It's not my duty that every time I have required to force to you should come to the lecture, you should to come to the lecture. ये मेरा, मैं हमेशा तो नहीं कर पाऊंगा आपको, क्योंकि दीज आर द ऑनलाइन लेक्चर. हमेशा आपका वो ये नहीं देख सकता हूँ मैं कि हर बार मैं उस सीट पे जाके चेक नहीं करूंगा. लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि एट द एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द सेमेस्टर डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्रॉस चेक योर अटेंडेंस, and at the end I am going to give a mark as per your attendance. मेरे को अटेंडेंस के ऊपर ही मार्क देने हैं, आपके प्रेजेंटी के ऊपर ही मार्क देने हैं. रिमेंबर दिस. ओके.
Now you have completed this open page number already. I have mentioned 89. So we'll read the first question. A force required to pull a body of weight 100 Newton. A force required to pull a body of weight 100 Newton on a rough horizontal plane. The meaning is very clear. A rough, whenever the word rough is going to come, remember that they have said that you consider frictional force. Okay, so rough horizontal plane, okay, is a 30 Newton. Determine the coefficient of friction if the force applied at an angle of 15 degree with horizontal plane. Determine the coefficient of friction if the force applied at an angle of 50 degree with a horizontal plane. So again we'll repeat, the force required to pull a body of weight 100 Newton. Pull word they have used. Pull and push, two phenomena is there. So we'll draw this diagram first. हंड्रेड न्यूटन की एक बॉडी है, उसको क्या बोला है उन्होंने? पुल. ओके, a force required to pull a body of 100 Newton rough horizontal plane is 30 Newton. पुल किया है तो 35 डिग्री एंगल है उसका, देख लीजिए 35 डिग्री एंगल, सॉरी 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन. एंड हाउ मच फोर्स इज दे हैव अप्लाइड? 30 न्यूटन. 30 Newton force is applied here. So they have asked coefficient of friction. They have asked here coefficient of friction. So we'll draw first FBD of this. We'll draw the FBD of this. I'll draw a separate FBD. Weight in a downward direction. Reaction in vertical direction. Reaction in vertical direction. Frictional force is opposite to the motion, and this force is applied force is 30 Newton, which is making an angle 15 degree. Okay. Now this is a very straightforward question. It is not difficult question. I knew it. Fr is equal to mu into r. And if I resolve this into two components, 30 cos 15, 30 cos 15 and 30 sin 15. So can I say that here directly here Fr is equal to mu into W? Can I say or not? If I do the summation of f of y, if I do the summation of f of y is equal to 0, I knew it, W minus W plus R is equal to 0. So it is R is equal to W. So I can directly write here Fr is equal to mu into W. Clear? So draw the FBD first. I will give a time 2 minutes to you. So after that we will start again.
Hello. Now you have completed this. So can I do FR is equal to mu into W if you are written? W already they have given, it is 100 Newton. So can I say that here mu into 100? Now just do summation of f of x is equal to 0. 30 cos 15 minus FR is equal to 0. So 30 cos 15 minus 100 mu is equal to 0. So find out the value of mu from this. Find out the value of mu. Find out the value of mu. No, it is not clear. 0.314, no? Hello? झिरो पॉईंट 0.280 means 0.28. Okay. 0.28. Okay, it is correct answer. It may be a correct answer. Here it may have some mistake. 0.314 answers they have given. But here is it we have made any mistake? 30 cos 15, it is a pull. But a pushing phenomenon, we have pulled this 30 cos 15, 30 sin 15. No, we are correct. Now just cross check the answer. Just a cross check answer. Anyone is having a different value than 0.28? सर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कितना होगा सर? एक मिनट. हेलो साकिब, क्या बोले आप? समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई सर. समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू आएगा ना. डब्ल्यू कितना आएगा? डब्ल्यू तो 100 ही है. सो आर इज इक्वल टू 100. सर वो 30 साइन आएगा इसमें. Oh, sorry. Okay. Oh, I made a small mistake here. You are correct here. 1 minute, everyone. I have made a mistake here. So here I have not considered this vertical component, so that there is a small mistake happened here. So summation of f of y, you do a separate calculation. So don't write down this. Summation of f of y is equal to 0. So r positive minus 100 plus 30 and 15 we have required to consider. So is equal to 0. So you will get a value of r here, and this value you are required to keep here. Now you may be correct now. So 0.314 is the correct answer. 31. You can check it now. You check it now. What is the value of r? What is the value of r? So this component I have not considered previously because it was my mistake. So 30 sin 15 and w, these two things we are required to consider during summation of f of y. R 92. 92. Okay, so after point value I will not consider. You consider. So it is 92. Now find out the mu value. Now find out the value of mu. 0.31. Correct. 0.31. So our answer and booklet answer is correct. Now I will take a second example. If anyone is not understood, please see here. Just I did a summation of f of y, 1, 2, and 3 component. Summation of f of x, 1 and another component, 2 components.
and they have asked to find out mu value. Very straightforward question. Now next question is 2.2.2. We will consider a pull of 25 Newton at 30 degree to the horizontal is necessary to move a block of wood on a rough horizontal table. Find the weight of the block if the coefficient of friction 0.20. Simple question again it is. A pull, again it is a pull force. Here they are asked to find out weight. Again, pull of 25 Newton. This force is a 25 Newton, 30 degree. Okay. Coefficient of friction उन्होंने बताया है कि 0.25. So mu they have given 0.25. So here small changes I have required to do. Same thing. 25. So 25 cos 30. 25 sin 30. This is weight. This is a reaction. And Fr is equal to mu r. So this is a. So try to solve this problem now. Same problem, nothing is going to change. Previous problem and this problem is remain same. Here we are required to find out the value of W. So do summation of f of y is equal to 0. Same. Minus W plus R plus 25 sin 30 is equal to 0. Okay, so summation of f of y. Then do a summation of f of x is equal to 0 because there are two unknowns. R is also unknown and W is also unknown. So let it be, you can keep as it is. Summation of f of x 25 cos 30 minus mu ची value तुम्हाला माहित आहे point. How much is the value of mu? 0.20. So 0.20 into R is equal to 0. Now find out the value of R from this equation and keep this value here and find out W. $99, sir. How much? 99. 99. Which value? W, sir. No. No, sir, Which one, sir? 120. Just Minus summa- 120. Summation of f of x is equal to 0. You do it. R value, how much it is going to come? 86.6. 108.2. 108. Okay, sir. 108. Is it a positive or negative? Obviously, it should Positive. be a positive. It should be a positive. Keep this value of 108 here and find out W. Find out the value of W. 120. 120. 120. So it is a 120. So such types of a problem, they will ask for a 3 or 4 marks in the final exam also. Very simple type of a problem. Kindly consider this. Always remember one thing is that they have asked a pull or a push. You can check it. Okay. So third problem I will give to you for homework.
थर्ड प्रॉब्लम आई विल गिव इट टू यू फॉर होमवर्क। होमवर्क के लिए ले लीजिएगा या असाइनमेंट के लिए कंसिडर कर ले लीजिएगा ये। Okay, now in this way we'll complete the two problems we have completed. Now we'll take example 2.3.1. 2.3.1. This 2.2.5 is also very simple problem. There is a no. We'll solve this problem after completion of ladder problem, because ladder problems are very important. They are asking many times in the exam. Okay. Everyone has completed this problem. Anyone is having any issue related to this? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए अभी तक, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, these are the last type अपने problems in this chapter. Now open page number 91. So we'll take a 91 2.3.3 problem so that you will get a somewhat a clarification from this problem. Visualization के लिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। बाकी के प्रॉब्लम जो है वो थेरोटिकल टाइप है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत क्लियर है, इसलिए हम ये प्रॉब्लम ले लेंगे पहले। सो नेक्स्ट लेक्चर कदम सर का भी लेक्चर मैं ही लेने वाला हूँ आज, because yesterday sir has taken my lecture, so that I am taking his lecture. Okay, and I have to complete syllabus as early as possible, क्योंकि सेकंड सेक्शन तक अब हम अभी तक गए ही नहीं है। Okay, now those are having assignment booklet, please read it. जिनके पास भी असाइनमेंट बुकलेट है वो रीड कर लीजिएगा। 2.3.3 प्रॉब्लम। सर आर कैसे निकालेंगे सर इसका? हाँ, थोड़ा सा आर सर। आर कैसे निकलने का? एफ ऑफ एक्स लेंगे ना सर वो? हाँ, इक्वल टू 0। करेक्ट। हाँ, और एफ आर माइनस इस 25 cos 30 माइनस एफ आर इक्वल टू 0। करेक्ट। एफ आर इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। यस सर। म्यू का वैल्यू 0.20 दिया है, तो 20 cos 30 डिवाइडेड बाय 0.20 कर लीजिए। यस सर, क्या करना है? 25 cos 30 यस सर डिवाइडेड बाय 0.20, उसमें से आर की वैल्यू मिल जाएगी ना आपको। ओके सर, मेरा 86 आ रहा है। ओके सर। नहीं आने वाला। कैलकुलेटर आप मेरे पास नहीं है, लेकिन वो नहीं आएगा। 25 cos 30 कितना आता है? देखिए 21 सर। डिवाइडेड बाय 0.20 86.6। 86। आर का वैल्यू किसी का 86 आता है क्या? दूसरे किसी का? cos 30 25 cos 30 is there. Just a cross check. You have taken 25 or what? यस नहीं सर, 25 cos 30 डिवाइडेड बाय 0.25। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? नहीं आ रहा है। कैलसी गलत दिखा रहा होगा सर। ठीक, कोई नहीं। नहीं कैसे गलत नहीं होता, कभी हम गलत होते हैं। सर 0.25 लिया है उन्होंने। म्यू आज आपने म्यू 0.25 लिया है क्या? 20 लिया है? 25 सर। no 25 कहाँ है? 20 है। ओके सर। वो क्वेश्चन में देख लीजिए ना, 20 है। ठीक है सर। ओके। Now next problem, already I have mentioned to you, it is problems related to ladder.
So open page number 91, 2.3.3. 2.3.3. Ladder मतलब सीढ़ी. Okay, so we have required to solve problem related to that. So I will explain one problem of ladder very clearly. If you are having a doubt, you can ask me now. One problem I will give it to you for homework. Tomorrow also we will solve another one problem and we will complete this chapter. Okay. Now see here what they have written. Who is going to read? I will ask to a specific person. Onkar Devkar. Onkar Devkar. Roll number 22. Onkar Devkar. ओंकार तुम्ही आहे तर का असून नसल्यासारखं करताय? Okay, let it. I will put him as absent today. Okay, Ganesh Balasaheb Jagdale, roll number 30. Ganesh, roll number 30. Okay. Chetan Khat means from today's lecture I am understanding now who is physically present, actually present and those are not present here. वो भी मेरे को समझ में आ जाएगा. चेतन खटाल, roll number 37. Yes, sir. Okay. So can you read the problem? Yes, sir. 3.2.1. 2.3.1. 2.3.3. 3. 2.3.3. 89 page number. Sorry, sir. 89 page वरती 2.2.3. नाही 91 म्हणतो रे मी. 91 हाँ. पेज नंबर 91. A uniform ladder ABCD 2 meter in length and weighing 200 Newton is resting against a rough wall and rough horizontal floor where coefficient of friction is 0.24. A man weighing 750 Newton stands at position B. Determine the minimum horizontal force P required to be applied at D to prevent the ladder from slipping away from the wall. Assume AB equal to BC equal to CD equal to D equal to 0.5 each. Correct. Now what is the meaning of this I will tell you. हम कभी लैडर पे खड़े रहते हैं ना, तो लैडर पे ऐसे आराम से खड़े नहीं रह सकते. कोई तो ऐसा मिनिमम फोर्स होना चाहिए जिसके कारण हम ऊपर रह सकते हैं किसी के भरोसे के ऊपर. तो उन्होंने इस प्रॉब्लम में क्या पूछा है कि कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जब 750 न्यूटन का वेट का आदमी, 75 किलोग्राम का आदमी, इन जनरल यू कैन सी 75 किलोग्राम का आदमी बी पॉइंट पे खड़ा है, तो उस लैडर को, उस सीढ़ी को डी पॉइंट पे कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना चाहिए ताकि वो सीढ़ी स्लिप न हो सके. मैं राइट हो? आप कभी भी देख लीजिए, ऐसी सीढ़ी लगा लिया आपने और आराम से उस पर चढ़ नहीं सकते आप, क्योंकि किसी ने तो आपको उधर सीढ़ी को पकड़ना चाहिए. नहीं तो एट द बेस यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई सम हॉरिजॉन्टल, कुछ तो ऐसा बड़ा वाला स्टोन रखना चाहिए ताकि वो स्लाइड न हो सके. तो अभी ये प्रॉब्लम है, दिस इज अ न्यूमेरिकल. तो उन्होंने क्या बोला है कि एट डी पोजीशन हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई, मिनिमम बोला है, मिनिमम हाउ मच अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई एट पॉइंट डी टू प्रिवेंट द लैडर फ्रॉम स्लिपिंग अवे. मैं राइट हो रहा हूँ? अभी आपके सामने वो डायग्राम है, लैडर है, और उन्होंने क्लियरली बोला है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल फ्लोर इज रफ एंड रेस्टिंग वॉल, जो वॉल है वो भी रफ है. रफ जब भी वर्ड यूज किया जाता है उसका मीनिंग यही रहता है कि इट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. वी आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर फ्रिक्शनल फोर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में. रफ का मीनिंग रहता है कि यू कैन कंसिडर अ फ्रिक्शनल फोर्स.
and if a smooth surface is there, then they are saying that don't consider a frictional force. So both walls, horizontal and vertical walls, both are rough. Therefore, I can say that at point A and at point E, we are required to consider a frictional force. So I have to draw the FBD now. So I will not draw this diagram on a board because we don't have a space, that much space is not available for us. So I am going to draw here a directly FBD. Okay. Now you are having that assignment booklet in front of you. आपके सामने ही वो असाइनमेंट बुकलेट है. तो आप एक काम कर लीजिएगा, जब मैं ये डायग्राम ड्रॉ करूंगा तब आप FBD ड्रॉ करूंगा तब आप उसकी तरफ देख लीजिएगा. नाउ सी हियर, आई विल गिव द नेम्स आल्सो A, B, C, D and E. Am I right or wrong? A, B, C, D, E. Now we'll check it. At D point, horizontal force is there. P force. At B point, person weight is there. 750 Newton. लैडर का खुद का वेट है. लैडर का खुद का वेट कितना है? 200 न्यूटन. एंड वेट इज ऑलवेज एक्ट थ्रू अ सेंटर. ये टोटल कितना है? 2 मीटर है. सो 1 मीटर पे मीन्स एट पॉइंट सी weight of ladder will be there. Please check it. Whatever I am writing, whatever I am showing, you require to understand thoroughly. Then and then such types of problem you can easily solve. Otherwise, it is quite difficult to solve such types of problem. Now, weight is going to act at from a central point. इस लैडर के सेंटर में से एक्ट हो जाएगा. तो ये कंप्लीट 2 मीटर है. हर एक का 0.5 मीटर डिस्टेंस है. सो 0.5, 0.51. सो फ्रॉम द पॉइंट सी the weight of ladder is going to act. Now this surface is a rough, so we have required to consider this is a support, so we have required to consider the reaction force. I will consider this is RE, and here also it is a support is there, so I will consider it is RA. I have removed the support represented by reaction, removed the support represented by reaction. Now they have said that there is in a rough horizontal and vertical surfaces, so that we have required to consider frictional force. Now I know that if I remove the P force, this ladder is going to move in downward direction, so frictional force should be in upward direction. So FR is equal to mu into RA. Have you understood or not? If I remove the P force, ये P force को हमने रिमूव कर दिया तो ये लैडर नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी. So frictional force should be opposite to the motion. Motion is in downward direction, so that frictional force should be in upward direction. If it is moving in a downward direction, it will move in this direction. E point will move in this direction, so that I have required to consider frictional force in this direction. Clear? So if it is moving in this direction, frictional force will be the opposite to the motion. So FR is equal to mu into RE. Clear? So this is the FBD of a ladder. This is the FBD of a ladder. If anyone is having any question, please ask me now itself. किसी को इस FBD में कोई दिक्कत होगी तो मेरे को पूछिएगा आप. सर ते FR खालचं FR आहे ना ते कसं आलं सांगा. हे बघा, जर फोर्स ही जर लॅडर खालच्या दिशेने येत असेल, ही जर लॅडर अशी खालच्या दिशेने येत असेल तर हा कुठं जाणार आहे? ह्या दिशेने जाणार ना, बरोबर की नाही? ही हिकल्या साईडला जाणार. मग अपोजिट टू द मोशन फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी देअर. Opposite to the motion and frictional force is there, and FR, or if you are not understood, I will consider this is a FR1 and this is a FR2, so there should not be confusion.
This is a FR1, this is a FR2. Have you understood? समझ लगा ये? Yes, sir. Okay. Clear? So this is FR1, this is FR2, mu into RE and mu into RA. Reaction due to support, weight of a ladder, weight of person, and minimum force. Any question related to this? Now you draw this diagram. Diagram draw कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपको ये समझ में आ गया तो बाकी की बातें इतनी डिफिकल्ट नहीं है. थोड़ा एंगल का जरा थोड़ा इश्यू है, दैट आई विल सॉल्व पहले, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, कंप्लीटेड डायग्राम. Have you completed the diagram? Yes, sir. Okay. Now you can check it. We required to find out the angle. हमको angle find out करने की जरूरत है. So you can clearly see that this distance is 1.8. This is a 1.2. No, sorry, 1.6. This is a 1.6. This vertical distance is a 1.6 and this horizontal distance is 1.2. Now can anybody tell that what will be this angle? What will be this angle? $53. Correct. So tan theta is equal to 1.6 divided by 1.2. So theta is equal to tan inverse this answer. So find out this theta. It is 53. No, is it correct? Is it a 53? Yes, sir. Okay. Now everyone is getting same answer or different? Please check it. Okay. Now 53 answer you have received now. Now, what we are required to find out? Please check it. We are required to find out P. Still, I don't know the value of RE. I don't know the value of RE. W, I know it. It is a 200. I know W. I know 750. I don't know RA. If I don't know RA, I don't know FR1. But they have given a mu value they have given. RE, if I know the RE, I can easily find out FR2. Means in this complete equation or in this complete diagram, unknown are three. First unknown is P, second unknown is RA, and third unknown is RE. First unknown is P, which they have asked to find out. Then second one is the RA, and third one is the RE. Clear? So we'll take our first equation, summation of M, we'll consider at point E is equal to 0. We'll consider movement at point E is equal to 0.
Now you can check it. Just before going further, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.2 रहेगा, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.6 रहेगा, but still I don't know the perpendicular distance of this 750 Newton. This distance I don't know. I don't know the perpendicular distance of W, and even I don't know the perpendicular distance of this. Are you understanding or not? See here, or I will clarify, or I will simplify this. Okay, so just here I will draw this diagram. Another diagram I will draw. I don't know this value. I can say it is x1, this is x2, and this is y. I will just consider it as a y. P force का perpendicular distance देख लीजिए. This is a P force. Perpendicular distance will be this. W का perpendicular distance will be x1, and 750 Newton person का perpendicular distance x2. That value we are required to find out. Then and then putting this value in movement equation is simpler. Are you understanding or not? So we have required to find out x1, x2, and y. Now how to find out? Now see here, it is very simple. Correct. You know this angle 53. You know this hypotenuse value. They have said that this is a 0.5, this is a 0.5, this is a 0.5, and this is a 0.5. So for x2, this will be the 1.5. Am I right? So which formula you are going to prefer? Cos 53 is equal to x2 divided by 1.5. Clear? Similarly, can I say that cos 53 is equal to x1 divided by 1. See here, this distance is 1. Am I right? And the perpendicular distance we are required to find out this perpendicular distance. Here, this and this is the remain same. This perpendicular distance we are required to find out. Am I right? So this 53 angle is here. So can I say that sin 53 is equal to y divided by 0.5? So first we have required to find out value of x1, x2 and y. Find it now. आप अभी find out कर लीजिए. ह्याच्या व्हॅल्यू सगळ्यांनी find out करा. If anyone is not understood, please ask me. Very simple thing is there. This distance is a 1.5, this distance is 1, and this distance is 0.5. So if I consider the first triangle, cos 53 is equal to x2 divided by 1.5. If I consider the second triangle, cos 53 is equal to x1 divided by 1. And in third case, in third triangle will be in this way. Third triangle, and I have required to find out this vertical value. So sin 53 is equal to y divided by 0.5. So find out the value of x2, x1 and y. Now why it is required? Again I am repeating this, to find out the perpendicular distance. These are the perpendicular distances. These are the perpendicular distances which we have required to find out. What is the value of x1?
.9, sir. 0.9. Everyone is Nice, getting sir. same. 0.6 sir. 0.6 sir. x2 ची 0.9 येते सर. x2.9. x2.9. x1 Yes, sir. Will. 0.6 and y 0.39. 0.39. Clear? Everyone has understood this? Now we will write the movement part now. अब हम मूवमेंट के बारे में थिंक करेंगे, मूवमेंट ड्रॉ करेंगे, मूवमेंट के बारे में और मूवमेंट का इक्वेशन पुट अप कर लेंगे ये. Okay. So first force I will consider this force, Fr force I will consider here, mu into Ra. Am I right? So first force into perpendicular distance is a clear cut, it is a 1.2. So Fr1, I will write Fr1 into 1.2. Is it going to produce clockwise or anti-clockwise movement? You can check it. Clockwise. Clockwise, correct. So force is in upward, perpendicular distance is in this way. It is going to rotate in clockwise direction. So Fr1 into 0.12. Then Ra, here Ra is going to produce again a clockwise movement, and perpendicular distance will be 1.6. So plus Ra into 1.6. Then 750 Newton force, you can check it. It is going to produce clockwise or anti-clockwise? Anti, sir. Correct. Anti-clockwise. Anti-clockwise. So it is going to rotate in anti-clockwise direction. So minus 750 into, just now we have found out value of x2. x2 is a 0.9. Okay. Now third force is a W. W is also going to produce anti-clockwise movement. W is how much? It is a 200 into 0.6. And P force. P force is also going to produce anti-clockwise movement. You can cross check. It is going to produce anti-clockwise movement. So minus P into perpendicular distance is 0.39. Clear? Now just we will clarify this. इसको हम थोड़ा बहुत clarify करते हैं. कैसे करते हैं कि what is Fr1? Fr1 is equal to mu into R1 और Ra, and what is the value of Ra? Mu ची value कितना है? 0.24. So just I have made here small changes. 0.24 Ra into 1.2 plus Ra into 1.6. Just make addition of this and take Ra as a common. Just add these two and consider this is the first equation. What I said again, I am repeating this. Take Ra common and do the addition of the bracket term. Simplification we did here. Clear? Now second thing, do summation of f of x is equal to 0. Now in this equation, in first equation there are two unknowns, so it is not possible to solve. Ra is the one unknown and second one is a P is also unknown, so it is not possible at all to solve this equation. So we have required to take next equation, that is summation of f of x is equal to 0. So here Ra, positive Ra, then minus P and minus Fr2 is equal to 0. So I will just make a simplification of this. Fr2 is nothing but mu is 0.24 into Re.
is equal to 0. So this is also second equation. Here unknown are 3 unknowns are there. Here unknowns are 3. 3 unknowns are either. Clear? Any doubt? Any question? Okay, now do a summation of f of y is equal to 0. Summation of f of y, I will take first one mu into RA. I know that mu is a 0.24 RA. Directly I am taking FR1, it is a positive one, minus 750 minus 200 and plus RE is equal to 0. This will be the third equation. This will be your third equation. Now you do one thing now. You are having a calculator with you. आपके पास कैलकुलेटर है, मेरे पास नहीं है कैलकुलेटर. Okay. Now one thing you do now in calculator, press mode button 3 times. Mode button 3 times. You will get equation. After equation, after pressing 1, there are 2 options, unknowns. So there are 3 unknowns. You can choose it now. 3 इक्वेशन वाला बटन पे प्रेस कर लीजिएगा. Clear? Now, in first case, a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 is equal to here constant value, which is something constant value is a c1 I will consider. So here a1 is the value of RA. Here x1 is a RA, remember that, plus x2 is P के correspond की जो value है, this will be the x2 is a P and x3 is actually RE, but this in this case it is a 0, is equal to C1. C1 is nothing but this complete value. You take this value at one side of this equal sign. So C1 will be that value. So what I wanted to say here that x1 is equal to RA, x2 is equal to P and x3 is equal to RA. इस हिसाब से आप ये 3 इक्वेशन, ये 3 जो इक्वेशन है वो सॉल्व कर लीजिएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. x1 is equal to RA, x2 is equal to P. If it is not feasible, I will write here x1 is equal to RA, x2 is equal to P, and the equation is in this format: a1 x1, a2 x2, a3 x3. Sorry, or I will put here a1 b1 is there, no, sorry, in that there is a1 b1 and c1 and d1. In this way equation is there: a1 b1 c1 and d1. So x1 x2 P and x3 is equal to RE. So many times you have solved the problem of matrix. मैट्रिक्स के प्रॉब्लम अपने 3x3 का मैट्रिक्स सॉल्व किया है ना, उसी हिसाब से ए इक्वेशंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे. क्लियर? Now try to solve this problem through a calculator. Anyone is having any problem for understanding? ये मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? I will give a time to you. How you are going to solve? You can check it now. मैं आपको टाइम देता हूँ, 5 मिनट का टाइम देता हूँ. ये 3 इक्वेशन आपके सामने है, मैंने 3 इक्वेशन आपके सामने बोर्ड पे रखे हैं, तो वो कैसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो भी देख लीजिए.
एंड सिंपलेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस, आपने 3x3 का मैट्रिक्स कैलकुलेटर से सॉल्व किया है। सिमिलर टाइप अपने प्रॉब्लम्स आर देयर। मेरे को लास्ट में पी की वैल्यू बता दीजिए, आर ए की वैल्यू बता दीजिए एंड आर ई की वैल्यू बता दीजिए। लगी जाएगा। Okay, now those have solved, please tell me the values. Okay, अभंगराव मयुरी, संगीता देशमुख, roll number 2, roll number 4, roll number 7, roll number 8. Anyone, please tell me that what is the problem? सर Yes, आर sir, इज इक्वल value. टू 481 आलाय। हा हॅलो सर। एक जण कोणता हर्ष हा सांगा, सर, हर्ष बोला। हा आर इज इक्वल टू 481 पॉइंट समथिंग काहीतरी आलाय। आर बरं, परत पी इज इक्वल टू 280 पॉइंट समथिंग काहीतरी आलाय आणि करेक्ट आर ई 834 पॉइंट समथिंग काहीतरी आलाय। करेक्ट, पी इज इक्वल टू 280 करेक्ट आहे, यू आर करेक्ट। आलेच सर व्हॅल्यू। हा करेक्ट। सो रिमेंबर दैट विद द हेल्प ऑफ एनी कैलकुलेटर यू कैन इजीली सॉल्व 3x3 मैट्रिक्स। आपको शायद सर ने बताया होगा कि हाउ टू सॉल्व 3x3 मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एनी कैलकुलेटर। और इफ यू डोंट नो प्लीज गो डू वन थिंग,
Just Google it out. You can go on YouTube and you find out how to solve 3 by 3 matrix problem. और unknown 3 equations, how to solve unknown 3 equations problem, ये आप गूगल भी कर लीजिएगा तो भी आपको मिल जाएगा कि if anyone is having any issue, again this I am repeating this, in calculator there is a one mode button is there, press 3 times mode button. After that there is a equation one, after that you press one button, one number 1 button. They will ask unknown how much, 2 or 3. So press the 3 button and put in this format that x1 is the array, x2 is a p, and x3 is re. So equation should be in this format: a1 x1 plus b1 x2 plus c1 x3 is equal to d1. They are going to ask this value: a1 b1 c1 d1, a2 b2 c2 d2, a3 b3 c3 d3. So a1 b1 c1 d1 value will be from summation of m at point e is equal to 0. a2 b2 c2 d2 value from summation of f of x is equal to 0. a3 b3 c3 d3 value from summation of f of y is equal to 0. But one condition is that, remember that x1 should be RA. Every time first term should be related to RA, second term related to P, and third term related to the RE, and fourth term is related to the constant. So in this way, if you keep the value in the calculator, you are going to get the answer, and that answer is P value. I am going to get this value is a 280. Clear? Anyone has not got a 280 value, P is equal to 280 value, please let me know now. किसी को 280 की वैल्यू नहीं मिली है, P की वैल्यू नहीं मिली है तो मेरे को बता दीजिए. सर ते येतच नाही सर, ते काय समजना येत झाले नाही? सर. हा, कॅल्क्युलेटरवर येत नाही? कॅल्क्युलेटरवर काढताच येत नाही सर. नाही अरे सर, येतं की मी समजेना तुम्हाला झालं. सांग, मोड मध्ये गेला तू, इक्वेशन मध्ये 3 अननोन दाबले का? 3 अननोनचे हा बटन सर. दाबलं का? हा, त्यामध्ये हा. A1 तुला विचारेल. हा A1 विचारला, आरएच्या जे कोएफिशियंट आहे का ना, आरएची काय व्हॅल्यू आलेली असेल की नाही, इथं बघ 1.6 अधिक 0.24 इंटू 1.2 ही जी व्हॅल्यू आलेली आहे की नाही तुझी, हा ती व्हॅल्यू तिथं पुटअप होणार तुझे. हो. आरएच्या करस्पॉन्डिंगची व्हॅल्यू तुझी A1 असणार. हा परत पीच्या करस्पॉन्डिंगची जी व्हॅल्यू आहे का नाही, पीच्या करस्पॉन्डिंग म्हणजे कोएफिशियंट, पीचा कोएफिशियंटची व्हॅल्यू जी असेल ना ती तुझी B1 असणार, B1. हा सर. आणि पहिल्या इक्वेशन मध्ये आरईची व्हॅल्यूच नाही, कुठं आरई नाहीच तिथं, त्यामुळे तिथं ते झिरोच येणार. तुझं C1 काय येणार? 0. 0. आणि D1 ची व्हॅल्यू किती येणार माहिती आहे का? 750 गुणिले 0.9 अधिक 200 गुणिले 0.6. हा सर. दोन्हीच येणार नाही, दोन कॉन्स्टंट व्हॅल्यू तिथे येणार. क्लिअर? आता बघा A2 च्या ह्याच्यामध्ये काय येणार बघ, तुझी 1. हा B2 च्या ठिकाणी 1. हा C2 च्या ठिकाणी 0.24. हा आणि D2 च्या ठिकाणी 0. क्लिअर? हा सर सर. ते विथ साइन घ्यावं लागणार ना? हा, विथ साइन घ्यावं लागणार, विथ, हा सॉरी -1 घ्यावं लागणार, विथ साइन घ्यावं लागणार. ओके, 1 अजून हा A2 1, B2 -1, B3 -24, B2 सॉरी C2 and D2 0. मायनस साइन सहित घ्यावं लागेल आपल्याला. क्लियर? सर x1 481 आता है सर. x1 480 नहीं, P की वैल्यू 280 आती है क्या? हाँ सर. दिस वैल्यू x2 आनी चाहिए. x2 कितना आता है? 280 सर. हाँ करेक्ट है, you are correct then A3 in your case, Ashish, A3 0.24, यस सर. B3 जो है 0, D3 सॉरी C3 C1 1 एंड 1. D3 जो है सो 950, 750, 850, 950. हा सर. हाँ आता ही ते
किती येते आता? सर एक्स 584 वाय हम्म, वजा 768 78 वजा 778. नाही रे, x1 तुझे किती, x2 किती येते सांग मला. सर इथं x1 x2 येत नाही सर, एक्स वाय झेड येते. तर y किती येते तुझे? वजा 778. चुकतंय काहीतरी. आणि z? 809. नाही चुकतंय, 280 यायला पाहिजे रे. y ची व्हॅल्यू 280 यायला पाहिजे. ओके सर, समजले, करून बघतो मी सर. हा, अजून एकदा ट्राय कर जरा, कुठं व्हॅल्यू मध्ये हा. कुठं प्लस मायनस मध्ये चूक झाली का बघा. हा सर. पी ची पहिल्या ह्याच्यामध्ये का नाही C3 ची व्हॅल्यू जी आहे का नाही -0.39 घ्यायला पाहिजे होती, आपण प्लस घेतले का बरोबर. x2 ची व्हॅल्यू, x2 ची सॉरी, B1 बघ जरा, क्रॉस चेक करून बघ एकदा. B1 प्लस घेतली सर आपण. हा, तिथं चुकलं ना, ते मायनस आहे, -P 0.39 आहे ना. Okay, you do the calculation repeatedly, you will get the answer. Okay, now Okay, sir. for today's lecture we'll stop here. And you take one homework problem to you. Homework problem तुम्ही कुठला घेताय? Same problem. Next page, 2.3.4. This problem you take for a homework. 2.3.4. Clear? Same problem is there. This हॅलो problem. सर. हॅलो हा, सर. बोला की. हा. सर ती आता वर पहिल्या इक्वेशन मध्ये 795 येत आहे ना, तर ती पॉझिटिव्ह घ्यायचं का निगेटिव्ह घ्यायचं D1 मध्ये? D1 मध्ये तुम्ही इक्वल साईनच्या इकडल्या साईडला घेतलंय म्हणलं ते पॉझिटिव्ह येते ना. हा, म्हणजे इक्वल टू च्या राईट हा, साइडची equal to साईन च्या- घ्यायची ना? हा, कधी बी लक्षात ठेवायचं, A1 x1 प्लस B1 x2 प्लस B3 x3 इज इक्वल टू D1 असते. D1 ची जे साईन असेल तेच घेणार ना तुम्ही. पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह असेल तर ओके सर. ओके. अगेन एनीवन इज हॅविंग एनी क्वेश्चन? सर जे आधी लेक्चर झालं ना याच्या आधी तेवढं अपलोड करा सर, मी नव्हतो सर हा, त्याला. ओके, अपलोड केलंय की मी. हे म्हणजे सर आजचं पण 2 ते 3 मधलं. हा हा, ओके. हे कंटिन्युअसच लेक्चर असणार आहे, त्यामुळं म्हणजे आताची एकच तर लिंक मी असेल, 2 लिंक असणार आहे. कॉलेजवर गेलतो त्यामुळे बोललो सर माझं. असू द्या, पण एकच लिंक असेल ना, मी आता जे टाकणार आहे ते एकच लिंक असेल. बर. Okay. So we'll stop here for today's lecture. Okay. So homework problem you are required to complete tomorrow. Means tomorrow I'm going to ask the question on that. Okay. Thank you.